है, तो सबको दिखा दें. जरूर. How about we open the floor out for some questions now? Be nice guys, huh? Okay, we'll have a mic reach you and you can come and you can ask your question. Hello sir. Sir, you have talked about the process. So मेरा एक क्वेश्चन था कि क्रिकेट एंड ट्रेनिंग के में और ये शूट के प्रोसेस में क्या सिमिलैरिटीज़ लगी आपको? I thought I will be asked, कितने differences हैं, but you asked about similarities. I won't talk about similarities या differences, but what I would like to talk about in general is cricket में क्या होता है ना, we don't have retakes in cricket. So your retakes comes as next game. And where it is slightly similar is the preparation. We prepare for a lot of things when it comes to cricket. So we think about opposition, what the condition may be, what we may face, what the situation may be. In acting also, I won't say it's exactly the same, but that adaptability needs to be there. I feel adaptability is the key word over here. आइए. हेलो माही सर. तो आपका काफ़ी इंटेंस रोल था इस फिल्म में. सो व्हेन यू वर प्रेपिंग फॉर द पार्ट, वाज देयर एनी स्पेसिफिक एक्टर जिनके बारे में आपने सोचा? उस समय ग्रीन स्क्रीन के सामने तो ज़्यादा नहीं सोच रहा था, बट अभी अगर ऐसे देखूँ ना, रजनी सर का एवरीथिंग फ्लाइंग, और इट्स द एंट्री ऑफ अमिताभ बच्चन, सो एवरीथिंग इज, there was so much wind and so much action, helicopter and everything happening. But when we were shooting, उस समय कोई दिमाग में नहीं था, उस समय सिर्फ डायरेक्टर दिमाग में होता है. आपने कह दिया, अभी एक डायलॉग हो जाए रजनी सर का. So my way or the highway. Yeah. So it's more like. So. And in English, the same dialogue is the Mahi way or the highway. So yannu vedi, tanni vedi. I don't know, pronunciation can be wrong. Another question here. हाय सर. सर, आपके फिल्म में आपके साथ बाकी 2 और सुपरस्टार्स हैं. सर, आपको कैसा लगा उनके साथ शूट करके? जैसा कि मैंने बोला, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. हार्दिक नहीं था, बट हार्दिक के साथ मैंने पहले दूसरे एड्स में किया है. सो विथ हार्दिक इट्स टू मच फन बिकॉज mostly we are joking around, we are making fun of either ourselves or the people around us. और शूट के माहौल में आपको मिल ही जाते हैं, 5-6-7 लोग मिल ही जाते हैं. अभी रिसेंटली एक शूट कर रहा था, तो एक्शन बोलते ही ना ऊपर कौवा बैठा था, वो चिल्लाता था पहले. तब तक साउंड वाला बोलता था, सर वो इंटरप्शन है. मैं बोला, यार या तो कौवे को भगा दो या तो मुझे भगा दो. एवरी टाइम आई कांट हैव अ रीटेक. So that's the case with Hardik. Smriti के साथ it was the first time when you were together part of a shoot for such a long period, and it was amazing to get an insight from her side. So we got a lot of time together, where we could joke around, have fun, banter. I think when cricketers are around, we talk a lot about cricket. In between, yes, जब ये shoot वगैरह. She is also a very good actress. I've worked with yeah. her as well, and she's a lot of fun to work with. Very natural. We can take 1 or 2 more questions. Yes, the mic will. Okay, first there. Hi Mahi sir, I am guest fan of you. You will play in 2025 in IPL or not? Yeah, the BCCI has to still make the rules and regulations for 2025. So unless they make the rules and regulations, I'm not sure what I will do. So I'll have to wait and watch till then. Coming back to film, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, what was your favorite part? When the director said, pack up.